Assalamu alaikum. Subscribe my AG Ahmad educational channel. Assalamu alaikum dear students, how are you? आजकल हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशन नंबर है आज की हमारी 12। Write an application to the principal requesting him to accept your apologize for condoning or ignoring the lecture. लेक्चर को इग्नोर करने की माजरत करने के लिए दरख्वास्त लिखें। द प्रिंसिपल कॉमा गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा A.B.C.City in bracket subject request for condoning the short lectures। याद रखे बेटे, इसके अलावा भी मेरे और चैनल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के साथ जो वी का निशान है उनमें उनका लिख दिया हुआ है, वो भी लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें। Respected sir, comma, most respectfully, it is stated that I am a student of intermediate or metric part 1 in this college or school। आप अपने क्लास और स्कूल और कॉलेज के लिहाज से आप लिखेंगे यहाँ पर। I am informed that my admission to the board has been stopped because my lectures are short। मुझे बताया गया है कि मेरा बोर्ड की तरफ से एडमिशन नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत कम लेक्चर्स अटेंड किए हैं। एक्चुअली आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर फॉर 1 मंथ। दरअसल मैं 1 माह तक जो है टाइफाइड के बुखार में मुब्तला रहा हूँ। इनिशियली द डॉक्टर कुड नॉट diagnose it because after some tests, but after some tests he advised me to complete bed rest for 2 weeks। इब्तिदा में डॉक्टर को भी टाइफाइड का मालूम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टेस्टों के बाद उन्होंने मुझे 2 हफ्ते का बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। I became very weak and lost my weight। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मेरा वजन भी कम हो गया था। Now I have recovered from my illness, but in this duration I fell short of the required lectures। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ अपने बीमारी से, लेकिन इस दौरान मेरे बहुत से लेक्चर मिस हो गए। I have already submitted leave application along with my medical certificate। मैं अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अपनी छुट्टी की दरख्वास्त भी जमा करवा चुका हूँ। I request you to send my admission because my academic record has been brilliant। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा एडमिशन भेज दें क्योंकि मेरी तालीम में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। I hope my request will be granted। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये दरख्वास्त पर अमल किया जाएगा या I shall be very thankful to you for this kindness। मैं आपकी इस मेहरबानी के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thanks you in anticipation। Yours obediently, X.Y.Z. May 20th, 2022। Have a nice day। Allah Hafiz। AG Ahmad एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।